Being from Delhi and trekking extensively in the mountains, I thought no other terrain can be as challenging as the Himalayas. Maharashtra's treks have blown me away. One such trek was Harihar Fort in the Nashik district, where you have to climb at 80-degree vertical stairway. It isn't for the faint-hearted, and here is my experience of it. जैसा आपको व्लॉग के इंट्रोडक्शन से पता चली गया होगा, ये बहुत ही रॉ व्लॉग होने वाला है। हम जा रहे हैं हरिहर फोर्ट। पूरी रात सोए नहीं हैं, रात के 2 बज रहे हैं और हमने कैब ली है और प्रॉबेबली यहाँ पे सो जाएंगे और सुबह पहुँचेंगे अराउंड 4-5 घंटे बाद पहुँचेंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेक के। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आज की जर्नी कैसी रहती है टू हरिहर फोर्ट। को आगे थोड़ा इधर से भी जा सकते हैं और आगे से भी जा सकते हैं, 2 रास्ते हैं। गुड मॉर्निंग पीपल फ्रॉम द बेस ऑफ हरिहर फोर्ट। मैं बहुत ही ज़्यादा नींद में हूँ। हम सोए नहीं थे पहले, बट पीछे जो आप मेरे देख रहे हो वो है खाने का स्पॉट और ये आपका एक लैंडमार्क भी हो सकता है। इस जगह का नाम है होटल ओम। हाँ, डबल हो। तो गाड़ी से हम लोग जैसे आए नवी मुंबई से, हमने कसारा घाट क्रॉस करके वी क्रॉस्ड इगतपुरी एंड यहाँ पे पहुँचे हैं जिसका नाम है कोतमवाड़ी। देयर आर 2 ways यू कैन कम फ्रॉम इगतपुरी या तो नासिक। अगर नासिक से आ रहे हो तो त्र्यंबकेश्वर से आना पड़ेगा और इगतपुरी से आ रहे हो तो इस रूट पे आओगे आप। सो वी हैव एंटर्ड द विलेज एरिया। ये आपका लैंडमार्क है, ये स्कूल। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ट्रैक स्टार्ट हो गया है। सो हरिहर फोर्ट ट्रैक का ये प्रॉब्लम है कि रास्ते बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे ट्रेल्स निकलते हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ से सबसे पहला पॉइंट है जहाँ पे कंफ्यूजिंग ट्रेल स्टार्ट हो गया कि हमें लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। वी आर टेकिंग द लेफ्ट वन। मैं आपको GPX फाइल भी दे दूँगी विच वी आर यूजिंग। उन्होंने पूरा ट्रेल मार्क किया है विच इज़ लाइक द बेस्ट थिंग। तो अगर आप कन्फ्यूज भी हो जाओगे यू कैन यूज़ दैट GPX फाइल। एंट्री है कैमरे से 500 रुपये लगते हैं। कैमरा से 500। सो देयर इज एन एंट्री टिकट 30 rupees if you are coming alone, and if you have camera along with you then there's 500 rupees if you have to enter Harihar. गूगल पे नहीं चलता है। गूगल पे नहीं चलता, so bring your cash. Yeah. जाओ मम्मी। हो, थैंक यू। स्टेप्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं और हम जल्दी आए थे बट लोग ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। सो आई थिंक द बेस्ट टाइम टू कम हियर इज़ ड्यूरिंग द वीकडेज। So people, before going ahead on this trail, I want to talk about something very important. We all know treks can be tricky and traveling in general right now during COVID is very difficult. We are living through a pandemic and taking care of your health is very important. And if you are an avid traveler like me, buying a health insurance policy for yourself and your family is very important because in case of medical emergencies, a major stress can be lifted up from your head because you just have to pay a small annual premium and you are sorted. With this, I want to introduce Navi Health Insurance, whose monthly EMI starts at just 241 rupees at no cost EMI. But of course, before buying a health insurance, there are a couple of metrics that you should look at. One is claim settlement ratio, which means that if a company is getting 100 claims, out of those 100 claims, how many have they settled? An ideal number is 95% and you should not go for those companies whose claim settlement ratio is below 95%, and Navi's health insurance claim settlement ratio is 97%. Apart from this, they have a network of 10,000 plus hospitals where you can get 100% cashless claims in just 20 minutes. And since we are on a trek, आप लोगों को ये जान के अच्छा लगेगा कि they have accidental injury benefits which is 2 times more than the sum insured. And if you are on your travels, आपको ये जान के भी अच्छा लगेगा that there is a free and unlimited online doctor consultation
plus a personalized claim relationship manager. The founder of this company is Sachin Bansal, who was also the co-founder of Flipkart. तो ये assurance तो है that this product is reliable. Check out the app. बस आपको 2 मिनट लगेंगे साइन अप करने के लिए. Links are in my description. By the way, बहुत ही गर्मी होने लग गई है. आगे चलते हैं because I'm very excited to climb those iconic steps. Everything is easy, Macha. So, since the difficult patch has started, time to keep my camera inside. GoPro Zindabad. So people, we just climbed this dangerous सेक्शन जो आपको बहुत ही दूर से दिख रहा होता है, 80 डिग्री ग्रेडियंट, और यहाँ पर गेट आता है जो क्रॉस करके आपको नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द स्टेप्स पे लेके जाएगा, विच इज़ इवन मोर स्कैरियर. इफ़ पीपल आर अफ्रेड ऑफ हाइट्स, आई डोंट नो हाउ दे मैनेज इट. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हाइट्स बट दिस स्टिल स्केयर्स मी, क्योंकि 80 डिग्री ग्रेडियंट है इन स्टेप्स का और सीधा खाई है नीचे. एकदम वर्टिकल डिसेंट है. इफ यू विल सी यहाँ पे भी इट्स ऑलमोस्ट वर्टिकल. सो पीपल, वी हैव रीच द हाईएस्ट पॉइंट. हमने वो स्कैरी सेक्शन क्रॉस कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं टेंपल की ओर. यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है और टेंपल है जिसकी इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स मैं वहाँ जाके बताऊँगी. और यहाँ से हमें हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, बट वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं अभी क्योंकि वीकेंड का टाइम है, तो काफ़ी लोग आ चुके हैं. So people, this is the pond I was talking about. और यहाँ पर साइड में हनुमान जी और शिव जी का टेम्पल है, मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आके प्रे कर सकते हो. और हाईएस्ट पॉइंट है इस साइड पे जहाँ हम नहीं जा रहे बिकॉज यहाँ पे वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं. बट यू कैन कम हियर, देयर इज़ ऑल्सो अ टी स्टॉल, सो यू कैन हैव रिफ्रेशमेंट्स एंड जस्ट रिलैक्स एंड सोक इन द वाइब बिकॉज द इंटायर सराउंडिंग इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स देखने को मिलेंगे. इनफैक्ट वहाँ से आपको ज़्यादा फोर्ट्स देखने को मिलेंगे, बट यहीं पर ही मेरे पीछे जस्ट राइट देयर इज़ वन मोर trekking spot, and that hill is looking very gorgeous. So if you remember, यहाँ पर हमारा last time scary segment खत्म हुआ था. उस stairs का हम दोबारा यहाँ पे पहुँच चुके हैं और basically हम नीचे जा रहे हैं. मैं आपको descent दिखाती हूँ because descent is even more scary. And again my GoPro is out and we are going down. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head. Successfully climbed down those stairs. Scary section खत्म हो चुका है. अब हमें उस विलेज की ओर जाना है अपने कैब ड्राइवर के पास. सल्धाना अभी 12:42. I think by 1:30 we should be downstairs for lunch. बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है, अब धूप चुभने लग गई है. So glad we started really early. अगर इस टाइम पे हम स्टार्ट कर रहे होते तो ऊपर जाते जाते बैंड बज जाती और नीचे आते आते एकदम पीक सन के टाइम पे हम नीचे आ रहे होते. So yes, again one tip, like I am always saying, start early. If I'll figure out where the road goes. Last stretch of this trek, इसको क्रॉस करके हम फाइनली विलेज एरिया पहुंच जाएंगे. So we are finally back to that village. हमें बहुत भूख लग रही है, अभी खाना खाएंगे और फिर वापस जाएंगे नवी मुंबई की ओर. So people, this was all our adventure in Harihar Fort. Advice to you guys will be कि आप weekday पे आओ क्योंकि
crowd avoid कर पाओगे and the experience will be 10 times better. And अगर आप monsoon में आ रहे हो तो again that will be a blissful thing to experience क्योंकि तब weather आपके favor में होगा. Although उस time पे trek थोड़ा tricky होगा because it's very slippery and since it's steep, so be careful. But I hope this video was otherwise helpful to you guys. If it was, then like, share, comment, subscribe for the algorithm, and I'll see you in the next video. Until then, bye, take care. Sky is falling.